हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। In today's video, we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 6th July 2022. Now, let's come to the first news. It is related to environment sector, environment related laws. Okay, कुछ अमेंडमेंट्स इसमें हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। यहाँ पे एक क्लॉज है विच सेज दैट इफ एनीबडी हु इज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और अ फाइन अप टू ₹1 lakh और बोथ। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन दैट द टोटल फाइन अप टू ₹5,000 डेली। सपोज दैट द वायलेशन कंटिन्यूज, मान लीजिए कि एक बार फाइन लगा उसके बाद भी वायलेशन कंटिन्यूड है, सो देयर विल बी fine of ₹5,000 daily, okay, till that contravention is being done. Then there is also a provision that a jail term can be extended to 7 years. Now over here the Union Environment Ministry has proposed amendment to this act where this imprisonment wala thing is going to go and this fine will remain. But what will happen over here, that a fine, the quantum of fine which is ₹1 lakh currently, it will increase from 5 to 500 times greater than those which is currently levied. Then there are certain more changes. The next is that there will be an appointment of adjudication officer who will decide on the penalty in the case of environmental violation. Okay. The next is ये जो exception है that there will be no imprisonment but the fine will be increased from 5 to 500 times. It will not be applicable in the cases where the violation leads to grievous injury or loss of life. Now this grievous injury or loss of life, they will be covered under the provision of Indian Penal Code 1860 along with section 24 of the EP Act. Then there is a provision for funds that whatever funds will be collected by imposition of fines, they will be accrued in or collected in environmental protection environmental protection fund. The next is the next important point, that is the removal of prison terms also applies to air act. एक air act है then which is the cornerstone legislation for dealing with air pollution, and the water act which deals with violation of water bodies. Okay, so this is also very important. So prison terms जो है वो एक्चुअली 3 एक्ट से जा रहा है। एक EPA एक्ट 1986, then Air Act, then Water Act. The next news is coming from the international sector, that is about the G20 and SCO. So S. Jaishankar, who is our external affairs minister, is going to attend G20 foreign ministers meeting in Bali. Bali is in Indonesia. So for 2022, Bali, that is Indonesia, is the chair of G20. So Indonesia is chair of G20. So here the meeting is going to be held of foreign ministers. The G20 summit itself, it will be held in November. ठीक है ना। अभी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाला है बाली में, बट जो G20 समिट है वो नवंबर में होगा। उसके बाद देयर इज़ वन मोर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Shanghai Cooperation Organization, this is the body which consists of 4 Central Asian countries. Those 4 Central Asian countries are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. Turkmenistan is not a member. Then we have China, Russia, India, Pakistan and Iran. Okay, Iran is the latest member. It is headquartered in Beijing. तो SCO हेड ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग होने वाली है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SCO हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन उज्बेकिस्तान इन September, where Prime Minister Narendra Modi is going to face Chinese President Xi Jinping since Galwan Valley clash in 2020. Now the next is from editorials. Here we are going to do about the trade deficit or current account deficit. Okay, so current account deficit में दो आते हैं, trade visibles and invisibles. So we have two, visibles and invisibles. Visibles में नॉर्मली गुड्स या जो मर्चेंडाइज कहते हैं जिसको,
मर्चेंडाइज दैट कम्स इन विजिबल। देन इनविजिबल्स में जैसे सर्विसेज आ गए, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र समबडी इज ट्रांसफरिंग द अमाउंट, ओके, सो सर्विसेज आ गए, ट्रांसफर्स हो गए, दे लाइक रेमिटेंसीज हो गए, डोनेशन हो गया, दिस कम्स अंडर इनविजिबल, ठीक है। सो विजिबल में हम सिर्फ गुड्स को देखते हैं, गुड्स, मर्चेंडाइज। यहाँ पे नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। नाउ देयर इज वन थिंग which is very important about current account deficit. So CAD, that is current account deficit, if it is negative, okay, it means the dollar is going outside India, fine, so there is outflow of dollar. And if it is positive, which rarely happens, then it means there is inflow of dollar, there is inflow of dollar, fine. उसके बाद ये तो हो गया आपका करंट अकाउंट, ठीक है। फिर एक और होता है कैपिटल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, FDI विच इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आपका आता है FPI दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके। देन लोन्स, then external commercial borrowings, and then NRI accounts. These are the part of capital account, okay। तो ये current account है, visible और invisible, and this is capital account. Now current account plus capital account, current account plus capital account, total they are known as balance of payment, they are known as balance of payment. अब फ्रेंड्स देखिए हो क्या रहा है, ठीक है ना, करेंटली द रूपी इज़ डेप्रिशिएटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है, द फर्स्ट रीज़न इज़ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के इंडियन कंपनीज के शेयर मार्केट के शेयर्स को खरीदने में लगा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो whenever the interest rates are attractive in India, then foreign portfolio investors they invest in India, but whenever they find at a rate attractive elsewhere, for example in US, then they will start pulling out their fund and they will start investing in US. So this is called as flight of capital, means the dollar is outflowing from India, and इसका एक impact क्या होता है, that rupee it starts depreciating, rupee जो है it starts depreciating, fine. The next is rise in crude oil prices. So now what is happening over here, that because of Russia-Ukraine crisis there is consistent rise in crude oil prices. So what is happening now, our import, okay, our import is becoming costlier. Now when the import is becoming costlier, इसका मतलब क्या हो गया कि now we are paying more dollar to buy same amount of oil. So then again it is leading to outflow of dollar, outflow of dollar, ठीक है। The next is domestic demand for certain items that has also increased, for example oil, fertilizer, coal, gold that have increased. So we know that coal का demand increase इसके लिए हो रहा है क्योंकि मानसून आ गया है और मानसून के टाइम में कोल माइनिंग होना पॉसिबल नहीं है, so we import coal and which is necessary, okay। We import fertilizers, that is also necessary because the kharif season is going on. Kharif season is that season you must have read in the school, kharif season, that is the season in which rain fed crops are grown, for example rice, wheat is a rabi crop. So मानसून हो रहा है तो खारिफ का सीजन आ गया तो फर्टिलाइजर का भी इंपोर्ट होगा ही होगा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस सिर्फ क्रूड ऑयल का दाम नहीं बढ़ा है, इन कमोडिटीज़ का भी दाम बढ़ा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आवर इंपोर्ट इज बिकमिंग कॉस्टलियर, okay। So because of that again the rupee is depreciating, okay। So this is the thing. So because of that we are experiencing very high current account deficit and very high outflow of dollar. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट बनते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट अकाउंट में भी डॉलर आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में FPI इज गोइंग आउट, सो यहाँ पे भी डॉलर कम हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नाउ अ सीरियस कंसर्न रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया और फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। Now friends, just go through it,
this article, that is trade deficit. So what is trade deficit? Trade deficit is import minus export, that is called as trade deficit. So India में क्या हो रहा है कि the trade deficit is widening, मतलब import is now larger than export and this gap is widening overall. So if you will just see that some of the imports which have increased, so if you can see that coal imports, they have increased, petroleum inflows, then gold import. Now why gold import is increasing? Gold import is increasing mainly because that is called as process of hedging. प्रोसेस ऑफ हैजिंग. ये हैजिंग क्या होता है? हैजिंग का मतलब होता है कि वेन एवर देर इज इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक मार्केट, सो वॉट हैपन्स दैट द रियल वैल्यू ऑफ रूपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो वॉट पीपल डू, दे वॉन्ट hedge protection against inflation, so they buy gold. Okay, then there is a slowdown in export. Why? Because the global demand is also very low. So if you will just see that some of the important Indian products, four of India's top export items, that is engineering goods, cotton yarn, drugs and pharma and plastic products, they have contracted. मतलब इनका डिमांड जो है वो बढ़ गया है. At the same time, domestic demand for imports of oil, fertilizer, coal and gold, that has increased. फाइन, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ और इम्पोर्ट बढ़ गया, तो डेफिनेटली आवर ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज एंड देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन वीकनिंग ऑफ रूपी एंड फॉरेक्स रिजर्व. नाउ इसको ऑफ शूट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, बाय दैट कैन हेल्प टू ब्रिज द फिजिकल डेफिसिट. ओके, and it has also raised the custom duty on gold from 10.75% to 15%. The next is, if you will just see over here in this handcuffing case, I will just do the highlights on handcuffing case. So over here, if you will see, the Karnataka High Court has passed a verdict in handcuffing. The name of the case is Suprit Ishwar Diwate versus State of Karnataka, where the High Court of Karnataka has imposed 2 lakh rupee fine for handcuffing an accused. So if यहाँ पे हम देखेंगे that High Court ने क्या बोला है कि in normal circumstances handcuffing is not required, it is only under exceptional circumstances, okay, that handcuffing can be resorted to. Now whenever the handcuffing is going to happen, it is the duty of the arresting officer to record the reason in the case diary and that will be open to judicial scrutiny. Fine, तो यहाँ पे जो ये केस है, this case is about an individual, a student, law student who has been charged under 5 criminal cases related to Negotiable Instrument Act for dishonor of check, and he had been arrested because a non-bailable warrant was issued by magistrate. अब हम आते हैं ऐसे कौन से 3 ओकेशंस हैं व्हेन द पर्सन कैन बी हैंडकफ्ड. सो पहला ओकेशन क्या है? देन एक्यूज्ड ऑन हिज अरेस्ट एंड बिफोर ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट. जब एक्यूज्ड को अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, पहला सर्कमस्टेंसेस वो है. द नेक्स्ट इज अंडर ट्रायल प्रिजनर व्हेन ही इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट from the prison or when he is going back from court to prison, and third one is a convict when he is being transported from jail to court and back. Fine. Then there is a one Supreme Court judgment of 1980 that is called as Prem Shankar Shukla versus Delhi Administration, where it has been said that the circumstances which validates incapacitation by iron an extreme measure is that otherwise there is no other reasonable way of preventing its escape. इसका मतलब है कि हैंडकफिंग करना तभी ज़रूरी हो सकता है जब और कोई मेजर अवेलेबल नहीं है किसी को भी भागने से रोकने के लिए. द नेक्स्ट इशू इज़ ऑफ कंपनसेशन. जैसे कि ये जो कंपनसेशन है हैंडकफिंग के टाइम, रॉन्गली हैंडकफिंग के टाइम जो कंपनसेशन देना है वो कौन देगा? अरेस्टिंग ऑफिसर देगा या स्टेट देगा? सो इट वॉज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज रविकांत एस पाटिल, दैट इज 1991 केस, वेयर बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड that the inspector of police responsible for violation of article 21 ordering him to pay rupees 10,000 as compensation. बाद में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कंपनसेशन अरेस्टिंग ऑफिसर को नहीं देना है बिकॉज ही इज वर्किंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, दैट हैज़ टू बी गिवन बाय द स्टेट. ओके, द नेक्स्ट इज दैट इट सेज that is the High Court rightly has said that it is a state responsibility to equip all police stations with adequate and necessary police personnel
to discharge their obligations, and there is, if required, there should be a adequate infrastructure for compliance with the Supreme Court judgment. The next is helping Sri Lanka more meaningfully. तो यहाँ पे हमें श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है. So along with that there is a food crisis also going on. So what the problem is over here, it is written over here that Sri Lankan rupee, and there is a lack of foreign exchange which has made the island to import essential commodities also very costlier. And then there are lack of medicine, food, rice, etc. in the island country of Sri Lanka. Here India has helped Sri Lanka with $3.5 billion this year to manage the shock. Then over here the article is saying कि in Sri Lanka also there should be something like Manrega, which we had done earlier, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was passed in 2005. So here there should be something like Manrega, which provides a social security net to people who are in distress. The next is tuberculosis. So India is called as tuberculosis capital of the world, and it kills around 1,400 persons every day. Okay, so to control this, the National TB Control Program of 1962 was launched with the public-private participation on a district level. The next important news is of BRI, Belt and Road Initiative. So BRI, we are discussing BRI because recently during the G7 summit, a $600 billion plan was launched by US. Okay, that name of the plan is Partnership for Global Infrastructure and Investment. ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंस लिखा है, बट पहले नाम पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से आ रहा था. And one of the aim of this global infrastructure and partnership for global infrastructure and investment is to counter the Belt and Road Initiative of China. Now, the Belt and Road Initiative of China, it was launched in 2013 by President Xi Jinping in Kazakhstan, and the vision was to build Silk Road economic belt and maritime Silk Route to break the bottleneck in Asian connectivity. Means simple is that it is the infrastructure program which aims to boost connectivity in Asia, Europe, Africa, Latin America. Latin America का मतलब South America. Okay, so these are the continents on which it focus. यहाँ पे क्या होता है, इसका modus operandi कैसा है? China, it offers huge loans at commercial interest rates that countries they have to pay within a fixed number of years. Normally Western countries इस type के loans को क्या कहते हैं? Predatory loans, because the countries they fall in debt trap. Let's take the two cases of Pakistan and Sri Lanka. So now see, Pakistan में project है, a very ambitious project which was launched in 2015. It is called as China-Pakistan Economic Corridor. It was announced in 2015 where China has pledged an investment of $62 billion. Okay, now यहाँ पे CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्वादार पोर्ट. मतलब ग्वादार पोर्ट को डेवलप करना है. वाई? बिकॉज ग्वादार पोर्ट विच इज़ इन बलूचिस्तान, इट इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फ्रॉम ईरान, बिटवीन ईरान, ओमान एंड पाकिस्तान. और इसको द एम वॉज टू मेक ग्वादार पोर्ट एज सिंगापुर ऑफ पाकिस्तान. मतलब यहाँ पे ग्वादार पोर्ट का अब आप कंडीशन देख लीजिए क्या है. There are multiple reports which suggest that shipping activities in Gwadar port is negligible. Along with that, जो residents है ग्वादार के, they are protesting against the large security force which have been deployed around Gwadar to provide protection to Chinese nationals who are involved in building the project. The same is with Sri Lanka. So in Sri Lanka, multiple infrastructure project was financed by China. It was announced in 2013. जो दो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से, उसमें से जो एक खास करके प्रोजेक्ट है, दैट इज़ हम्बनटोटा पोर्ट एंड कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट. बोथ प्रोजेक्ट्स नाउ दे वेर अगेन दे वर साइटेड एज दैट दे आर गोइंग टू act as a platform for industrial development, but they have been described as white elephants. White elephants का मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो हम्बनटोटा पोर्ट, इट was going to be developed as a deep sea port. Okay, but the port has always been secondary to the busy Colombo port.
उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो लिम्बो में हैं। 2000 कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, सेंट्रल एक्सप्रेसवे एंड हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग अदर्स। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान हैज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली बी ब्रॉट अंडर BRI, बट अफगानिस्तान हैड साइंड MOU विद चाइना इन 2016 where China promised $100 million in अफगानिस्तान एज एन इन्वेस्टमेंट। फिर अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स इज कंप्राइजेस ऑफ 200 आइलैंड्स एंड बोथ इंडिया एंड चाइना दे हैव स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा है कि वहाँ पे एक चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज है, इट इज़ a $200 million 4-lane ब्रिज, बट वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कि जब तक अब्दुल्ला यमीन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वॉज कंसिडर्ड एज प्रो चाइना, सो मोस्ट ऑफ द चाइनाज इन्वेस्टमेंट हैपेंड इन मालदीव्स एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। When he was ousted in 2018, then Ibrahim Soli, he led a India first policy, and now India has a strategic partnership, strategic investment in Maldives. Now coming to Bangladesh, so Bangladesh is playing a balancing act. So Bangladesh has also joined BRI in 2016. Now देखो India is not a part of BRI, fine, and Bangladesh was promised second highest investment in South Asia after Pakistan. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे या कुछ प्रोजेक्ट्स जो इसमें बने हुए हैं, सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिजेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कर्नाफुली रिवर टनल प्रोजेक्ट्स, अपग्रेडेशन ऑफ चित्तागोंग पोर्ट and rail line between the port and China's Yunnan province, but there has been delay in these projects in Bangladesh. The next is from Navy, Indian Navy. So here we are talking about our aircraft carriers. Okay. So India currently has two aircraft carriers. One is INS Vikramaditya and one is INS Vikrant. INS Vikramaditya, it is a Russian origin carrier, okay, and it is in service currently. And INS Vikrant, it is indigenously built by Cochin Shipyard Limited and is going under the final round of sea trials. Since because they are aircraft carrier, so they require fighter jets. So the news is about that. So which fighter jets are being preferred? तो यहाँ पे दो की बात चल रही है, एक फ्रांस से और एक USA से। ठीक है, फ्रांस से कौन सा बात चल रहा है? अबाउट रफाल। ठीक है, और USA से वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोक्योरिंग F-18। The next is about NATO. So Sweden, Finland signed protocol to join NATO, which awaits ratification. So NATO, which is called as North Atlantic Treaty Organization, it has 30 members. Now 2 more members have signed to become the member of NATO. These are Sweden and Finland. प्रॉब्लम किसको थी? टर्की को था। टर्की के में कुछ जो टर्की जिनको मिलिटेंट ग्रुप्स मानता है वो एक्यूज करता है कि स्वीडन एंड फिनलैंड दे गिव शेल्टर टू देम एंड दे नीड टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू टर्की। ठीक है, अभी टर्की का एक और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि टर्की का जो नाम है इंटरनेशनल नाम वो चेंज हो गया है, वो टर्की से तुर्की हो गया है। ठीक है, यस। सो नाउ so Sweden and Finland, they assured Turkey that they will be extradited. So now what is happening over here that they have signed the protocol to join NATO. अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? जितने भी 30 कंट्रीज हैं, they have to ratify this in their own parliament, and once it is ratified, then they will become full member of NATO, Sweden and Finland. जब तक ये रेटिफिकेशन नहीं होता है पार्लियामेंट में, मतलब जो 30 कंट्रीज हैं उनके अपने अपने पार्लियामेंट में, तब तक NATO will not get protection against NATO will not get protection under defense clause of NATO, which says that attack on any one member of NATO is considered as attack on all the members of NATO. ठीक है, उसके बाद NATO का हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स इन बेल्जियम। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, नाउ जस्ट सी ओवर हियर, Finland and Sweden, they have pledged not to support the Kurdish militant group PKK and YPG groups of the network of US based cleric Fethullah Gulen. ठीक है, तो इन्हीं को
Turkey has said that Sweden and Finland, they support these terror groups, which should not be done. Okay, and the assurance has been provided by Finland and Sweden. Finland and Sweden, they both are Nordic countries. Okay, अब यहाँ पे we are just going to talk about G20 in short. So G20, it is group of 20. So in 2022, the chair of G20 is Indonesia. 2023 में it will be India. तो इंडिया जब 2023 में होगा तो ये मीटिंग कहाँ पे हेल्ड करेगा? तो फर्स्ट कहीं आया था न्यूज़ में कि कश्मीर में करेगा, बट नाउ कंट्रीज दे आर अपोजिंग. सो सी पाकिस्तान अलॉन्ग विद चाइना, दे आर अपोजिंग द G20 मीटिंग इन कश्मीर. ठीक है. Now the reason is that why they are opposing, because Kashmir according to them is a disputed territory according to Pakistan and China. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.